featured on various renowned sites like Wed Me Good, Witty Wows, and many others. She specializes in bridal makeup and is known for her trendy techniques and styles. Okay, so ladies, I honestly just want to rush into the session. But before that, few things to keep in mind because all of y'all are muted. If any one of y'all have doubts, you can drop it in the chat box and we shall take it towards the end. And I shall obviously drop the product list in the chat box so you'll have a better idea. For the ones who are not doing the makeup with us today, unfortunately, please go ahead, grab your pen and paper, and you can take notes on it. For our one-day workshop members, ladies, our one-day workshop members, to unlock your certificate, you would have to wait towards the end of the session, attend the quiz, and then you can download your certificate. Okay, so am I all clear, ladies? Is everybody understanding? Shall we just rush into the session? Yes. Okay. Okay, that's amazing. Great. Okay. So, Komal, the stage is yours. Yeah. Hi, everyone. Yes. Hi, everyone. Hi. Okay, let me just spotlight you. Yes. Yeah. And also, you need to unmute me once. Okay. Hi. Hi, everyone. Hope you all are doing great. So we'll just quickly start the session, and if any queries, you can just write it down and Yolo will explain. Yeah. Obviously, and also we can discuss it after the class, after all the makeup. You can just write it down, all your queries. I'll be telling you the products also. Okay, and who all are just doing the makeup with me today? हिंदी में बोलो. अच्छा, और कौन कौन आज हमारे साथ मेकअप कर रहा है? मैं अभी मेकअप जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, एंड आप लोगों को जो भी क्वेरीज होगी जस्ट राइट इट डाउन. ऑल्सो यू कैन जस्ट note any of your queries, then we can just continue to discuss it after the makeup session, after the class. In the end, we can do a questionnaire session. Okay, so just write it down. I'll just explain each and every product in detail. Please write it down and I'll just start the class. मैं बस class start कर रही हूँ. Okay guys, so yes, I cleaned her face with a wet wipe. Now I am using rose water. This is spray base from Rio Herbs. You just need to spray it. Just need to spray it. Okay, and leave it for 5 to 10 seconds. Okay, so next. हिंदी में भी बोलूँगी, इंग्लिश में भी बोलूँगी, तो इंग्लिश में बोलूँगी मैं, इंग्लिश में. Okay. Okay, I'm using Forever 52 concealer for her eye makeup base. Okay. And just I'm applying on her eye area. Next I'm using damp beauty blender. This is from Plume. Also guys, if you want the certificate, you need to attend the quiz which is we are having after the makeup session. So you need to wait patiently and get the certificate till then. Just need to dab it. And I will just use a loose powder to set it. Don't open now. I'm using Color Bar loose powder to set her eye area. You can use any good powder, loose powder.
Okay. After setting, I would be using this palette from Huda Beauty Naughty. And I'm using brush is from London Pride blending brush. This is LP314. So I'm taking this color and removing the extras one. Yeah. And just on the outer corner, I am just dabbing it. And you need to blend it again on the outer corner. Also on the crease line area. Again on the other eye, and I'm just blending it. This is from the Huda Beauty palette, Naughty Nude. I'm taking Untamed shade. Now again with the blending brush, again I'm using this blending brush from CS Essential. This is E5, and I'm taking this color, little more darker shade, and just again on the outer corner I'm dabbing it. And on the other eye area also. इनसाइड आपने देखा मैंने छोड़ा हुआ है उसको. वाई? जस्ट बिकॉज कि हम वहाँ पर अच्छे से थोड़ा सा इन्हांस लुक दें इसको, ताकि आईज थोड़ी और बड़ी एंड बोल्ड लगे. Komal, can you please zoom in a little bit? They're unable to see. Now it's perfect. Ladies, let me know, is that okay? Now again I'm taking the angular brush. This is brush number PAC050, and to give more depth I'm using this darker shade, and I'm just making a line like a liner and dragging it over here. Again on the other eye, same, to give a nice more depth. Now I'm taking this lighter shade in between, this is a matte lighter shade, so that it gives a nice enhanced look. आईज थोड़ी और बड़ी लगी इसके लिए हम ये लाइटर शेड लगाएंगे.
We don't need to put any concealer or corrector or anything else. Okay. So Komal, can you show from the palette what color you used first and then how you got this gradient? I use this. Okay. That's it. No, for the outer corners. Outer corners, first I use this shade. This is Okay. moreover a nice purplish brown, and more darker shade. This is spicy. Shade number is spicy. This is more enhanced purple shade, darker brown tones with purple tint in it. And then in between I'm using this matte color. Shimmer नहीं है, ये matte है. Got it. ये इससे थोड़ा enhanced look लगता है और eyes में ना. And if you want to leave the eyes like this, you can leave it like this as well. आप इसमें liner कर दो, बहुत अच्छी enhanced look आएगी. But if you want, we can just add as it is a glamour look, so we can just add a little shimmer in it. I'm again blending it to give a nice depth कि कोई line create ना लगे. Normal tight मत रखो. Okay. So next I'm using this Forever 52 palette. Little slow. Okay, मैं fast कर रही हूँ. ठीक है, मैं slow करती हूँ. This is Forever 52 palette. Shade number is MEP002. इसमें सारे shimmery eyes होती हैं, shimmery glitter palette है ये. Shimmers हैं इसमें. So I'll be using this only. I won't be using any other glitter shimmer. आप देखना इससे कितना अच्छा effect आएगा. I was fast. अच्छा. Okay, I'll do it slowly. कोई बात नहीं. I'll wait. आप करो. No worries. Till then I'll do the blending part more. I'm taking a fresh blending brush again and I'm just blending it here. So I hope everybody is on the same page, ladies, especially for the ones who are doing the makeup along with us. Are you all on the same page? I can also wait for a while. Don't worry, guys. I'll wait. आप कर सकते हो. Okay. Yes. Okay. So ladies, yes, so we are keeping in mind everybody's learning pace is different. Some might find it very fast, some might find it very slow. Don't worry, we're somewhere in the middle. We respect everybody's learning pace, so not worry. Also, both the eyes are not looking same. Don't worry, guys. It's in between. The complete look होगी तो ये obviously same ही लगेगा. Sitting position ऐसी होती है कभी कभी आपका. हमने बहुत close up दिया है. She's holding the laptop. So it depends. That's so ना? sweet of her. Thank you so much for doing this. That's okay. Done. Everyone is done. So I can continue more further. I'm getting done written. So I hope everyone has done. Yeah. Okay. You can just also, if you want to enhance more, as it's a glam look, you can just dab more matte color in between. Yeah. And then you can now dab it again. ये इससे थोड़ा enhanced look होती है और आ जाएगी enhanced look. Now next I'm using this palette. This is from Forever 52. Shade number is MEP002.
And if you guys want Forever 52 products, we are having it at Glam Factory, so you can buy. अच्छा, हिंदी में भी बता देती हूँ, मतलब आप लोग हम अब मैं ये जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ इसका नाम है मैग्निफिकेंट आई शेडो पैलेट, शेड नंबर इज MEP002। आप लोग ये खरीद सकते हैं ग्लैम फैक्ट्री से भी, या वी हैव इट हियर, यू कैन जस्ट DM मी फॉर फर्दर डिटेल्स। एंड आई एम टेकिंग इट ऑन माई फिंगर से लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। एंड जस्ट सी, ये आया है हैंड पे एंड मैंने इसको बस स्लाइटली डैब कर रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ड्रैग करते हुए। सी हाउ एनहांस लुक आ रही है इसमें। सेम अगेन दूसरे आई के लिए भी आई एम यूजिंग द सेम शेड एंड यू कैन जस्ट सी here, more enhanced look के लिए I'm using this। Okay girls, नाइस शिमरी इफेक्ट आ गया है। Next I'm using this Huda Beauty palette Rose Pastels. I'm using this shade again to give a nice enhanced look। In between center पे, दूसरे आई पे भी। Now to give a nice depth, I'll again use that palette, वो palette देना, with this angular brush from PAC 050। I'll take this shade, okay, and again on the outer corners I'll just give a depth effect ताकि थोड़ी सी eyes और enhanced look आए। Same on the other eye। You can see how am I dragging it। मैं कैसे इसको ऐसे कर रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ लाइनर काजल लगाने से पहले ना। इफ यू वांट यू कैन जस्ट गिव अ नाइस ब्लैक टोन ऑल्सो साइड्स में, ताकि थोड़ा सा और क्लासी एंड एनहांस लुक आए। सो आई नीड ब्लैक आई शेडो वाली पैलेट देना, थोड़ा सा मैं और इसको एनहांस करूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस एनास्टेसिया की अम्ब्रेजी पैलेट, उसमें से मैंने ब्लैक शेड लेना है। ओके, थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए मैं साइड में ब्लैक करूँगी, क्योंकि इन्होंने ब्लैक ब्लू सा पहना हुआ है, तो ऑब्वियसली हम जो भी लुक करते हैं हम उसको मैच करेंगे, आउटफिट से ज़रूर मैच करेंगे ना। सो यू जस्ट नीड टू blend it। You can see how I am blending it। ओके, ये इन बिटवीन प्रोसेस है, ऑब्वियसली ऐसे ही लगेगा इन बिटवीन है, तो ये बना लो एक बार। ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, इससे बहुत अच्छी लुक आती है, लुक एनहांस हो जाती है। वॉइस इज नॉट कमिंग, आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज वॉइस अच्छे से आ रही है बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग लाइनर, स्केच पेन लाइनर फ्रॉम रिकोड। वीडियो बना रहे इसका। I'm using sketch pen liner from Recode। This is a very thin sketch pen liner, बहुत अच्छे से इससे लग जाता है, ठीक है। So I'll be using it from your, लगाते हुए भी लो, उस साइड में लेना चाहिए, यहाँ से ले लो वैसे।
Komal, can you repeat the eyeliner that you used? I'm using Recode Sketch Pen eyeliner. Don't open your eyes, okay? Now on the other eye area. Giving a nice wing shape, okay? Right. Both the eye area. Let it dry. Okay, let her dry the liner. Then I'll be using अब मैं उसके बाद लैशेस यूज करूंगी. I'll be using lashes from London Pride. Okay, मिंक लैशेस हैं ये. सब क्लोज रखना को एकदम लाइट ड्राई हो जाए. ठीक है, कंफर्टेबल हो ना. काट दे, फोन बज रहा है उसमें. सो फर्स्ट आई जस्ट सी कि उनकी लैशेस में मुझे काटने की कितनी ज़रूरत है. आई जस्ट मेजर इट वंस. देन आई कट द एक्सेस वन. जो थोड़ी बड़ी लग रही है मैं उसको कट करूँगी. ओके, बोथ द साइड से कॉर्नर्स हमने कट करना है. And which lash glue are we going to use? Yeah, I'll just tell you. I'm using Miss Claire black lash glue. मेजर रख के देखो आपको कितना लग रहा है उनकी आईज पे. मैंने भी रख के देखा ना. ब्लैक लैश ग्लू, यस. Comes with a brush applicator. I would always suggest to use a black lash glue. वो दिखती नहीं है. Just I'm applying on the wand, and after few seconds, just you need to apply. Don't open, okay? I'll let you know when to open. On the other eye,
Let it dry for some time. थोड़ा सा आपको पकड़ना चाहिए लैशेस को हमेशा, ताकि वो सेट हो जाए. फोन कट कर. नहीं करना था अभी. मैं जब बोलूँगी तब आप ओपन करना. Okay. Next I'll be using Inglot का loose shimmer. Shade number is XL73. XL73. So I'm using Makeup Studio की glue, glitter glue. थोड़ा सा हैंड पे लिया मैंने. और मैंने एक फ्लैट सा ब्रश लिया है. मैं पहले लैश ग्लू अप्लाई करूँगी थोड़ा सा शिमर के लिए. आइज क्लोज करना. इन बिटवीन सेंटर एरिया. बोथ द आइज. डोंट ओपन योर आइज. Okay. Now next I'll just apply. Don't open your eyes. Okay. Excuse me, if you don't mind, like only. Don't your eyes closed now. Just to give me 2 seconds. अपनी glue Wait, लगाइए. just too tight. Like I need to go washroom. Give me a second clue. Let me just put the glitter. Okay, no problem. I'm applying it with the brush and just to dab it to give it more nice blingy eyes. Okay. On the other eye area also, where I had applied the glue. You can see now it's giving a nice sheen effect. Now you can go if you want. Yeah. Can Just you excuse us. Yeah. My model needs to go to the washroom. She'll just be there. Back. It's too tight. Like I wanna make it loose. So Komal, shall we take some few questions? Yeah. Till then we can do that. Yeah. Amazing. Okay. So ladies, do start pouring your questions. Okay, let me just pick up some from the chat box. फिर आए क्यों जाओ वहाँ पे? नहीं चाहिए जाओ. Yes, ma'am. You can just continue with the question answers. Okay. So ladies, do drop in your questions. I'm trying to take. Okay. So Mubassir is asking, ma'am, for hooded eyes, eyeliner corner start करे या outer corner से? Yeah, obviously outer corner से ही करना चाहिए. Okay. And with makeup, this is Meghna's question. How do you cover a black mole on the face with makeup? Mole can't be covered, but it's a bigger one, or it depends how it is. Concealer same technique होती है. Concealer की technique से ही करोगे. But अगर वो दिखाने लोग तो दिखाते हैं, अगर ऊपर है तो दिखाते हैं, right? So don't worry about this. Natural birthmarks के लिए please guys don't worry about that. मेकअप ना enhances your features. ठीक है, तो एक क्लियर हम करते हैं. Obviously 1-2 लेयर करते हैं, but हम बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते हैं. Okay. And for dry skin, what is the best moisturizer? Embrolis. Okay. Who else? Glitter name please. Yes, I'm putting that. Don't worry, I'll do it. Blending के लिए कोई techniques है, like an easy tip or trick?
For eye blending, eyeshadow Yes. blendings, it's just you need to hold it from back. Blending हमेशा ब्रश को इतने पास से पकड़ोगे ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी. आई जस्ट शो यू. जितना पास से आप ब्रश को पकड़ोगे ना ब्लेंडिंग नहीं अच्छी होगी. आप जितना दूर से पकड़ोगे स्लाइट मोशन में आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो. और कभी आपने जैसे डार्कर टोन लगाया है आईज पे तो जो नेक्स्ट आप जैसे मैंने किया उसके बाद मैंने प्लेन ब्रश लिया और मैंने उसको साइड्स में और ब्लेंड किया प्लेन ब्रश से, तो जो एक्सेस होगा वो रिमूव हो जाता है. अफ्रीकन स्किन टोन पे आई थिंक गाइज यू नीड टू चेक गेट योर शेड. मतलब आपको अपना शेड पहले पता होना चाहिए. ओके, देन यू जस्ट नीड टू take a darker tone. Always go for a darker tone to conceal your under eyes. Okay, firstly orange से तो हम करते हैं but darker tone से हम और उसको पूरा dark circle pigmentations को hide कर देते हैं. Then mix two foundation. You need to match it according to your skin. अब see African skin किसी की dark है किसी की light है. I can't suggest like this, but you need to know the shades, how much you need the lighter shade and the darker shade. You need to mix and match. Always keep in your vanity one lightest and one darkest. Okay. So ladies, let's just ask questions to what Komal has done till now with the eyeshadow. Yeah. I think so. That would be better. In eyes का आपको जो भी questionnaire करना है, you can just ask. Sorry. Yes. Or if you all are doing any eye makeup and you all are finding it difficult to do anything, definitely Komal will help you here. Yeah. So we have a question. Any other substitute if we don't have setting spray or I think the rose water? Mist. You can use any rose water mist, face mist, which is spray base. Okay. Also, what would be the CTM for combination skin? CTM for combination skin. Okay. Like you can use any rose water. Oh, sorry, for cleansing you need any cleansing milk or any face wash. You can go with this. Any, like I would suggest Rio Herbs is having a good series of gel based moisturizer, pore minimizer, so you can use those as well. Or Love Earth. I would suggest Love Earth as well. Like you need first is face wash. You need to clean your face, wash your face. Then you need a toner, nice spray mist toner, so that you can just minimize your pores. And then it comes the moisturizer. If you're having an oily skin, you need a gel based moisturizer which comes in L'Oreal or in Rio Herbs. You can use that. And yeah, you're done. Then afterwards, if you have a little dry skin or your cheekbones are dry in winters, usually it happens, so you need a nice face oil. You should use a face oil. These should be the products, basic skin routine products, everyday makeup. Okay. And any good primer for wrinkled or matured skin? Smashbox or Recode. Okay. So ladies, I have posted the product list, whatever Komal has used till now. So you can go and find it there because most of you all are asking about what glitters, what primers. Here it is. Okay. Yes. Okay. Concealers also, I have mentioned it before. Yes. So ladies, any questions about the eye makeup, the lash application, the eyeliner, the skincare routine? Good face oil you can use, Love Earth, Zoba face oil, both are good. Okay. So पफीनेस के लिए आप आइसिंग कर सकते हो. पफीनेस के लिए आप स्मैशबॉक्स की अंडर आई क्रीम यूज कर सकते हो, बट बेस्ट पार्ट इज आइसिंग. सी गर्ल्स, जो मैंने अभी आई मेकअप किया है ये आप हुडेड में भी कर सकते हो, नॉर्मल आइज में भी कर सकते हो. इससे ना आइज बड़ी लगती है. एनहांस लुक ब्राइडल में भी कर सकते हो, ग्लैम लुक में भी कर सकते हो.
बस यू नीड टू मैच द आउटफिट फर्स्ट. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें ये करना है वो करना है. सो यू नीड टू डू इट लाइक यू नो विथ एनी आइज में. आप ये जो मैंने आइज करी किसी भी आइज पे कर सकते हो. Okay. यू फाइन. Yeah, fine. And if they need to remove the lashes, what is like the easiest way, not harmful way to remove the eyelashes? We need to peel it. If they want it proper to safely remove it, you just need to use a micellar water makeup remover and just keep the wet pad on the eye area and just drag it. But then also you need to peel the lashes. Okay. Yeah. Okay. So the model is back, so we'll just start with the session. Yes, yes, yes. Come. एक और pillow दे. हाँ जी. They want closer, na? Can you just push it a little bit? Thank you. Okay, so our model is back. Close your eyes. Okay, now you can see the eyes. So ना मैंने अभी ग्लिटर कर दिया है. पेट टिश्यू देना. I'll just wipe the eye area पूरा. दे दो पूरा डिब्बा. तुम लोग जा सकते हो. Just need to wipe it because बहुत फॉल आउट है. I'll just show you क्योंकि जितना ग्लिटर शिमर गिरा हुआ है ऊपर देखिए. एक सेकेंड. नाइस प्लेस कर लो. विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश ऑल्सो जिसे लैशेस पे लग गया था बिकॉज ये सीधा उठ के चले गए थे. आईज ओपन कर दी थी तो आपको थोड़ा सा रिमूव करना होगा. ठीक है, ओपन करना. सी इतना डस्ट पार्टिकल्स है. सो वाई, इसलिए मैं बोलती हूँ पहले आइज करना है. इट्स बेटर टू डू आइज फर्स्ट. पैनिक सिचुएशन नहीं होगी. यू कैन जस्ट टिश्यू का डब्बा. With other tissue I am doing it again. ऊपर देखना. Look up. Look up. They're the same Johnson baby wipes, हाँ right? जी, yes. प्रॉपरली मैंने फेस क्लीन कर दिया है. ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप. आई वुड यूज दिस लव अर्थ का ग्लास ऑयल फ्रॉम लव अर्थ. एक वीडियो बना लो इसकी. एंड आई एम जस्ट टेकिंग इट ऑन माई ब्रश यूजिंग अ फाउंडेशन ब्रश on her under eye, all over on her face. Also, Komal, they want to know your Instagram handle. Yeah, it's Glam Factory by Komal. Okay, I think many of you are joining for the first time, right? So on the neck also, I'm using the same oil because obviously आप फेस पे फाउंडेशन करोगे, बेस करोगे, यहाँ नहीं करोगे, अच्छा नहीं लगेगा. नेक अलग से ही दिखती है. So you need to moisturize the neck as well. You can use your hand also. अगर आप अपने फेस पे कर रहे हो तो आप हैंड से अच्छे से कर सकते हो. बट अगर आप कुछ और लाइक यू आर यूजिंग सी
यू नीड टू नो द क्वांटिटी. अगर किसी की ऑयली स्किन है तो आप थोड़ा कम लगाओगे, किसी की ड्राई स्किन है आप ज़्यादा लगाओगे. एंड ऑल्सो इट्स विंटर, सो यू नीड टू मॉइस्चराइज योर स्किन, यू नीड टू प्रेप योर स्किन. अगर आप प्रेपिंग नहीं करोगे तो स्किन में वो ग्लो एनहांस लुक नहीं आएगी, एक नेचुरल शीन ग्लो नहीं आएगा. ओके, सो नेक्स्ट आई एम यूजिंग एमरोलीज की क्रीम on her face and neck. Look up. अच्छे से मॉइस्चराइजिंग होगी तभी बेस नीट एंड टाइडी होगा, अदरवाइज पैची लुक आ जाएगी. आपको ऐसा लग रहा होगा मैं बहुत लेयर्स लगा रही हूँ, पर ये नीड है, दिस यू नीड टू डू, अदरवाइज आपका बेस फ्लॉलेस नहीं आएगा. Look up. Name, this is Embrolis cream. You can use Cetaphil also. That is Cetaphil की ट्यूब आती है मॉइस्चराइजिंग क्रीम की, that is budget friendly if you don't want to invest in Embrolis. Next I'm using, ये eyeshadow हटा दें यहाँ से. I'm using Recode primer. This you need to apply with fingers. Okay, so I'm taking on my finger and on her smile lines I'll just rub it. Under eye, ऊपर देखो. थोड़ा थोड़ा जो लेफ्ट ओवर है उसको पूरा ड्रैग करना है फेस पे, सो दैट एक क्लीन शीन बेस आए. ठीक है, प्राइमर हाथ से ही लगाना चाहिए. प्राइमर इज नॉट यूजफुल, प्राइमर तो बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज प्राइमर के बिना तो आई डोंट थिंक मेकअप हो सकता है. नाउ आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 कंसीलर. दिस इज ऑरेंज करेक्टर टू हाइड हर डार्क सर्कल. ओके, आंटी का दरवाज़ा बंद करवाएगा. कौन सा? इधर के रूम का दरवाज़ा बंद करो. अंडर आइज पे मैंने लगाया है ये. थोड़ा थोड़ा जहाँ पे भी पिगमेंटेशन लगता है थोड़ा थोड़ा आप वहाँ लगा सकते हो. ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर एंड आई एम जस्ट डैबिंग इट. And this is a damp beauty blender, Damn beauty right? blender, yes. Now I'm using Milani का concealer, darker shade. This is warm tan. To conceal her, हमने जो orange corrector लगाया है उसको हमने concealer dark use करना, उसको hide करने के लिए, ताकि इनकी बाद में pigmentation ना हो. So I'm using a darker shade, okay? जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज कंसीलर लगाया है वहाँ पर लुका, थोड़ा सा फॉरहेड पे भी. ठीक है, नाउ अगेन विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर आई एम जस्ट डैबिंग इट. अब आप देख रहे हो बिल्कुल भी इनके डार्क सर्कल्स नहीं विजिबल रहेंगे. एक स्किन टोन इवन हो गई है. ओके, now I'll be using Forever 50, this is Makeup Forever HD foundation. I'm using shade number 245, Y245. पैलेट में लिया है मैंने
Now I'm taking a foundation brush और इसको अच्छे से look up ऊपर. दीदी बोर हो जाते हैं ना दीदी तो. Now I'm taking a beauty blender and I'm just dabbing it. Look, yeah. And how many pumps of the foundation did you I take, took Komal? 2 and now it's it's there because I'll use it for the neck after. Just I'll dab the base then. Look up. Just need to dab it. Okay, so I hope all of you all are on the same page, ladies. Do give me a heads up. Are we going too fast? Is everybody understanding so far? Please let me know. Yeah, And please. yes, as Komal said, we will take questions towards the end. Okay, so don't worry about that, ladies. Okay, Now I'll take the leftover on her neck area. Okay, this. So I'll be using a buffing brush for the neck area. This is from CS Essential Buffing F4. Okay. Look up, chin up. ये अच्छे से मर्ज हो जाता है. And with the beauty blender, I'll again just look straight and there. Look up. Just tap. Look up, baby, please. Don't look down. Chin down. Yeah, this straight. Okay. Look straight on your face, right? That would be your angle. Hope you're not going too fast. Okay. Next I'm taking just perfect. Okay, that's great. So I'll continue with it, right? So next I'm using Too Faced concealer to highlight her face. Okay, so I'm using Porcelain. Look up. I'm just on her under eye area. is there any alternative for the foundation and concealer that you use? You can use Forever 52 or Milani or Maybelline Age Rewind concealers. Okay. Now again with this I'll contour also her face. I'm using this Kryolan ki bridal palette to contour darker shade. I need a cream contour. Just make your face like this, fish face. See, I'll just give a nice look this side.
Okay. Now again with the same beauty blender, firstly I'll just blend this. Was there any method you followed for contour for her face shape? No, nothing like this. You just need to make a fish face. Okay. This method, this technique will make your face sculpted. You know, natural features enhance होंगे, cheekbones out होंगे. Okay, थोड़ा सा side करना, इस side से. So I'm just blending the contour part. Again, make a fish face. You get the direction right with this. Right. Yeah. Straight face, face straight in front. Also, they want to know, Komal, Mhm. like now we're doing the red carpet glam look. Yeah. Would it be different if we were doing a bridal makeup, or would you do the same Almost steps? the same. It just depends because आजकल bridal makeup में we are less of shimmers, like you know, more over into shimmers, not more glittery. Less of subtle looks are more in bridal. The steps would be the same, just to enhance. Obviously, the red eyes, red outfit होगा bridal में, या pink होगा तो we'll do it with browns, like you know, golds, more brown tones. Okay. Steps would be the same. Maybe little product would be different because I use high. If bridal base है तो obviously base और high होना चाहिए. So maybe I'll use Huda Beauty, NARS to give a heavy look. But technique would be the same. Fish face. Okay, now And again. does this foundation oxidize in any way? No, it won't. The technique which I am doing, it will not. Okay. It is the technique, not the foundation. Look. Again, you need to dab it. ऊपर देखना, नीचे मत देखना. And we need to नीचे मत देखना बिल्कुल. We need to set it with the loose powder. So I am using again Color Bar का translucent powder. Okay. हम नीचे देख सकते हो. Now after contouring this, I'll use a powder contour also to set the contour. See again fish face. So I'm using Forever 52 का shade. This is SHC002 contour palette from Forever 52 and the brush is from London Pride contour brush LP308. This is angular shade. Again fish face. So I need to take it on the brush and just need to as it's a glam look, like तो photogenic face होना चाहिए क्योंकि photos में हमेशा face और healthy लगता है. face नीचे रखना, तो हमें उसको थोड़ा सा sculpted दिखाना होता है, right? Bronzy effect होना चाहिए थोड़ा सा. Also on the forehead if you want, if because जो look हमने की है उसमें थोड़ा सा हम forehead को भी दे सकते हैं bronzy effect.
face straight. Yeah, that's perfect. I hope everyone it's clear. Look up. I'll just pour some more loose powder. I'll just bake it. Look up. ओके, जब हमने अंडर आई में लूज पाउडर ज़्यादा लगा दिया है, फाइन लाइंस हाइट देखो थोड़ी देर में आएगी, पर ये बेकिंग करोगे तो सेट हो जाएगी, फाइन लाइंस दिखेगी नहीं इतनी. ओके, तो अब हमने सेम आईज को इन्हांस करने हैं. तो अब हमने बेकिंग करी, उसके बाद आप अंडर आईज में काजल और जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग this Morphe brush from Morphe. This is E36. Okay, and I'm using the palette, the same palette which हमने जिससे आइज की थी ना, हम वही यूज करेंगे. We'll use this shade. देखो आप मेरे हाथ में पहनने वाला, देखो उसमें होगा, नहीं तो फटाफट फोन करके मंगाओ. रुको, मेरे पर्स में होगा, मेरे पर्स में होगा, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. I have it. दूसरे लेके आओ, मंगा फोन करके, बारिश हो मैं गई, लेके आओ. आप मंगा लो बेबी. Okay, so I am using the same shade. Look up, and I'll just ब्लेंड करा है मैंने. एक्सेस को निकाल दो. हेलो, पाउडर पफ लेके आ जाओ, पाउडर पफ लेके आ जाओ. मैम ने जो हाथ में पहनती है. हाँ हाँ, ठीक है, चल ठीक है. अरे तो मैम हैंड पहनती है. So now again, to give a nice more depth, I'm using this black eyeshadow from this palette. Guys, you will get the certificate, but you need to wait till the end and you need to play the quiz. Then, no, model is not getting bored. No, She is enjoying the not at all. session. But आपको certificate end में आप attend करोगे quiz तभी मिलेगा. So I'm taking the blacker one and I'm just giving a nice depth. Okay, बहुत naturally करना है आपने. Now again I'm taking this darker shade from the same Naughty Nude palette and I'm just dragging it again. देखना. As it's a red carpet look, right? So we need to enhance your eyes more. काजल नहीं लगाओगे चलेगा, बट आईज एनहांस लगनी चाहिए. ओके, थोड़ा सा और इफेक्ट देना है हमें. So I'll just remove the excess fallout. ठीक है, now we can just open. I'll just remove the excess powder, loose powder from her face. ठीक है, ये आपको excess निकालना है.
फेस, पूरे फेस पे आपको मैट टच देना, उससे क्या होगा, थोड़ा सा बेस सेट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, स्ट्रेट फेस करना। आई नो अभी बड़ा इनकम्प्लीट सा ऐसे लुक आ रहा है, बट बहुत अच्छी लुक निकलेगी, ट्रस्ट मी। Yes, I hope everybody is on the same page, ladies. Please let us know. It is very important that all of us are doing it together. या okay, till then I'll just apply a lip balm on her lips. I'm using Agate का lip balm, blend करना। Yeah, this is Agate lip balm. It comes with the color, but gives a very nice nourished lips. अभी करो blend। क्या करना था next? आईब्रोज करो, आईब्रोज कुछ किया था। Next I'm using eyebrow palette from L'Oreal and आउटर लाइन लेना है आपको आईब्रोज का ना, नीचे और ऊपर, एंड यू नीड टू फिल इट। ठीक है, लेफ्ट ओवर से ही आपको फिल करना है। They're asking which is better, Komal, the powder formulation or the pomade? See, like you know, sometimes बहुत कम आईब्रोज होती हैं, हेयर नहीं होते, तो वी नीड पोमेड। बट अगर हमें जब अच्छा हेयर है, कहीं गैप है ना, जैसे किसी को कट है, इनको भी हेयर बढ़ा, तो पोमेड की नीड पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन यूज पाउडर। ठीक है, फिल अच्छे से होना चाहिए। सो इनसाइड ऑल्सो वेयर एवर यू फील लाइक कि इनको जहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सेस नीड है, वहाँ आप डैप करके एक्सटर्नल लगाओगी। यू कैन सी आईब्रोज मेक सो डिफरेंस। आईब्रो वाला निकाल इसमें से, इसमें से वो वाला ब्रश होता है ना, वो निकाल, उनको दिख ही नहीं रहा। नहीं, जो ऐसे वाला ब्रश होता है मस्कारा वाला, थोड़ा सा इधर देख। नहीं, just होगा मेरे पास, मैंने कहा आपने कुछ आईब्रोज पे लगाया था क्या? No. वो गट्ठे हुए। Give me 1 minute, I'll just get the wand. No problem, no problem. Divya, right? Yeah, right. I hope you are going out after this look. Do you Oh, have yeah. any plans? Oh yeah, definitely. Yeah. Great, great. Yeah. Lovely. So is this the first time you're having like makeup on you, or you know, had it before? I had it before too. Okay. Yeah. Great. You need this brush, wand, mascara kind of a brush to just set the eyebrows once.
little more. Okay, so we are done with the brows. We are getting comments already. Beautiful face. Yes, she is having a beautiful face. So now I'm using this. You can use any highlighter or any lighter shades. I'm using this pastel color eyeshadow. I'm using this shade for her inner corners. Look. This is from Huda Beauty. Okay. Eyes closed. Also on the brow bone. Okay, so now I'm using Milani blush. Shade number is 11. Okay, give a smile. And I'm using the blush brushes from London Pride HP 305. Lip shade abhi lagaya nahi, just the lip balm. Don't worry, guys. So yeah, already smiling and smile. Perfect. Okay, लिप बाम अभी लगाया नहीं है, अभी लगाऊंगी. टिश्यू चाहिए मुझे निकाल के देना. Thank you. Getting so many comments, guys. Please tag me on Instagram. It's Glam Factory by Komal. Share your stories with me. Dab karna. Yes, definitely, ladies. I am putting the Instagram link in the chat box right now. You can go ahead and follow Komal and tag her. Yes. Okay, now I need the lip liner. यहाँ पे लगाना पड़ा था. ये देखो. Okay, so I'm taking this lip liner is from Forever 52. Shade number is F1606. ठीक है? वहाँ ना ब्लैक बॉक्स पड़ा, उठा लो. यहाँ पे वो पड़ा है ब्लैक बॉक्स. नहीं. स्माइल करना थोड़ा. Okay, now I'm using again this Forever 52 की lipstick है. Shade number is FT006. Smile. Be calm. Blend once, little bus.
I'm just giving a nice nude shade, brownish nude, not much nude but brownish nude. लिपस्टिक का डब्बा देना फिर से. Best teacher, thank you. Getting so many DM comments like this is too great. Thank you so much. Thanks for loving always my class. I think always black class is super hit here. Every time I get a lot of comments here. Smile. I'm using now, next the liquid shade I'm using is Maybelline ka 65 number. Yes, ladies, once the look is done, then we will go on and I will share you the product list. Side by side, we'll take up questions and we'll do the quiz. So do not worry. Smile. Perfect. That's about all करना. Normal. Smile. Perfect. ये blusher यहाँ पे और नहीं है. I think I'll just blusher come back. Yes, ladies, do hold your horses. I will send you the quiz link. Do not worry, we will do it together. I am just waiting till the end because I will be able to guide you specifically on what to do. Okay, so don't worry, just some more time and your certificate will be there with you. So do not worry. Okay. Thank you, Sarah. That's so sweet of you. Okay, I'm just applying little more blush to give a nice enhanced look. So, blush कहाँ गया? So this is pink from In Color Cosmetics. Smile. This is a little highlighting blush. दूसरा ब्रश कहाँ है मेरा? ब्रश उधर क्यों रख रही है तू? हर चीज उठाते हैं. So again I'm using this. Now the last part, what is left, guys? Tell me. क्या बचा है last? I think the mascara. Great, fixer. Yes, very good. Look up. Look down now again. Again up. Look up. ऊपर ही देखना. I'm using Forever 52 mascara. Okay. अच्छा, somebody was saying कि eyes similar नहीं लग रही है. Eyes similar लग रही है कि नहीं? ये बताओ. ऊपर देखना, look up. Q-tip देना मुझे. लग रही है similar eyes कि नहीं? अलग लग रही है.
Hmm? It's similar, okay. Shoot. Okay, let the mascara dry, then I'll do the fixing part. ऐसे करना लिप्स को. Normal. आप डैब मत करो अब. ठीक है, अब नहीं करना डैब. Smile. Don't dab it. मस्कारा सेट हो गया है तो आई बी यूजिंग मेकअप फिक्सर फ्रॉम रियो हर्ब्स. आपने ना ऐसे नहीं करना, टाइट नॉर्मल रखना है. ठीक है, Open आई eye? क्लोज Okay, yeah. बट डोंट टाइट. जस्ट आई एम जस्ट फिक्सिंग इट. ओपन. हाउ इज द लुक गाइस? Quiz please. Okay. I will, ladies. I will. फोन देना मुझे रेड वाला. अब आप वो Everything बंद कर is खोल दे. amazing. It's gorgeous. Thank you. Yes, wonderfully done, Komal. Amazing. Thank you so much. Thank you so Yes. much. Wow, the chat box is just flooding with a lot of compliments for your model and your artistry, I must say. Thank you so much. This means a lot. I hope everyone enjoyed the session. Yes, we absolutely did, and I'm very sure all of them cannot wait to do this for New Year's and to Yes. start the new year with such a glamorous look. That would be everything, right? Yeah. Yeah. Perfect. Salute. Eyes down.